stage the partners of the MJ Group, Mahima Madam, Sneha Madam and Manish Sir. When I came to know about this Premier League, the tagline was very interesting, tax sahi hai. In our country, when everyone else is trying not to pay tax, they're encouraging everyone else to pay tax, file the returns. You guys are doing wonderful. Manish, how did this idea come, tax sahi hai? I would like to introduce the concept of tax sahi hai today. Tax sahi hai specifically means that if every person in India pays his taxes, 140 crores of population, paying just 1,000 rupees per person per month, would make India debt-free, would make India the world's largest economically advanced country. It's not just about you and me, it's not about all the memes going on in the newspaper which says कि एक बंदा टैक्स भरता है 100 बंदे बैठ के खाता है. अगर 140 करोड़ लोग 1,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ खाली पे करना शुरू कर देते तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस देश हो सकता है. Be it China, be it Germany, be it Europe, be it USA, be it Bill Clinton, Bush, whatever, India has the power, and that's what tax is all about. Thank you. My next question is for Sneha. Sneha, many people, when the tax season comes, June, July time, they feel this, uncomfortable feeling. They say, how will I prepare my tax? Am I preparing it the right way? Does your firm has a criteria that you only file the taxes of only rich people, or anyone can contact you, no matter how simple, how complicated their tax is? Do you charge any money upfront if they come to you to have a discussion with you on email or on WhatsApp? Can you say something about your business model for tax filing? Definitely, thank you. Thank you for giving the opportunity to answer this question. Actually, tax is the awareness program. So, हम लोग हमेशा करेक्ट टैक्स किस तरीके से हो सकते हैं. वी हैव टू शो ऑल इनकम, नॉट टू हाइड एनीथिंग. सो वी गाइड अकॉर्डिंगली, वी मेक देम कंफर्टेबल टू शो देयर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस. अवेयरनेस करके देते हैं कि टैक्स क्यों भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए, कितना भरना चाहिए, सही भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए. वो हम फ्री एडवाइस देते हैं. उसका कोई भी चार्जेस नहीं है. मिनिमम चार्जेस या फिर जो भी टैक्स बेनिफिट, टैक्स प्लानिंग के जो भी चार्जेस हैं, अप्रोप्रिएट चार्जेस आफ्टर फाइलिंग टैक्स रिटर्न होते हैं, ना बल्कि उसके पहले. तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग समझे किस तरीके से टैक्सेस है, इनकम टैक्स लॉ किस तरीके से है. सबको करना इतना आसान नहीं है. रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने भले वो ITR 1 इतना सिंपल कर दिया है, लेकिन वो सिंपल नहीं है. अंडरस्टैंड टैक्स कंसल्टेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है टू इवैल्यूएट योर टैक्सेस. Thank you, Sneha. Mahima, I guess you were all behind this concept, bringing it to the front. You got some sponsorship from various organizations. It's not easy to have 50, 60 people come and play and then organizing everything, snacks and everything. So did you enjoy doing this? What is your assessment? Will you do it again? Yes, I'll definitely like to do this once again. What I have noticed is nowadays the generation that has come up is also eager for social cause, is also eager to be right in terms of citizenship, is also eager to do whatever is right and not just save money. In this event, we have got participation from more than 50 plus people who came up सामने से and said, we want to play for this social cause, and this is how we have created tax a year. This is our first year, and we are going to take it year on year, where we have an aim to make more than 80-90% of the Indian population to pay taxes along with tax sahi hai. Thank you very much. Thank you. My next question is for Manish. Manish, I see on this banner MGA Group. I also see the MGA Foundation. I want you to give us a sense of what MGA Group is, what all activities it is involved in, how big is your group, how do you make sure that you get the best people to work for you, and how do you find the people that you work with? Okay, thank you Neeraj for putting across this question. This means a lot to me and to MJ Group. Firstly, I would like to say MJ Group does not start with MGA. MJ Group starts with CODI. CODI is Confederation for Women Entrepreneurs. There we not only advise, we also support women entrepreneurs into accelerating their business, into becoming a businesswoman, and into becoming the advanced women of the country who can do everything for the nation, by the nation, and with the nation. Now coming to MJ Group. MJ Group is a consultancy firm. It's a business management consultancy firm. It not only empowers women, it empowers every person to become a businessman, to become a business owner. For us, our every employee stands for the best of it. We wish our employees to grow in the, accelerate in the business, in their venture, in their employment, such a way that जब हमारे employees दुनिया में job मांगने जाए तो employer HR कंसल्टेंट, HR एजेंसी, HR हेड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स नहीं, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के MD आके बोले भैया तुम्हें हायर करना है, बोलो कितना पैसा चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट MGA. वी एम्पावर वुमेन, वी एम्पावर आवरसेल्फ. वी डोंट से दैट बी विद अस, बी इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट इज योर ग्राउंड व्हिच यू आर गोना प्ले, एंड इन योर ग्राउंड नो वन कैन डिफीट यू. दिस इज ऑल अबाउट MGA. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. Coming to a company called Gopal Steel who sponsored this event. Gopal Steel is an organization who have supported MGA in all its bad times, in all its down times, and today Gopal Steel have enhanced as a multi-billion-dollar company with the support, with the help, with the advisory of MGA. Coming down to MGA Foundation. MGA Foundation supports women, supports children, supports anyone in need of any kind of support, and donate generously for the betterment of the nation. Thank you guys.
to thank few special people here on the ground. Number one is Mr. Neeraj Goela. He is a scientist working with Dow Chemicals. He is here to support us. Next is Amit Manila, who is working with Siemens, here to support us. Most important for us today is Mr. Sharat from Olive Cloud, who is here to support us. Some of the key people from MGA team are Mr. Vinay Goyal, who is a chartered accountant, who has been CFO of more than 15 companies, who is here to support us, and the entire MGA team. Special thanks to Vinayak, special thanks to Mastub, who have been great in performing whatever they had to do. Thank you guys. Hard luck. The game went to the last ball. What was going through your mind when 4 overs were done and you were defending badly? Do you think there were some mistakes of player lineup? Should you have promoted him up the order? Our strategy failed as of now. So I think the strategy is lacking in us. I should first back to me as a batsman. I have to play at the ground. आप अपनी टीम के लिए ओपनिंग बैट्समैन की तरह है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपको लग रहा था कि स्कोर इजीली बन जाएगा? हाँ, हमारी स्ट्रेटेजी तो अच्छी थी, पर लक पे डिपेंड रहा। मुझे मेरी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जो भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी गेम है, कैसे भी बाजी मार सकता है। बिल्कुल सही बात। गेम आखिरी बॉल तक किसी को नहीं पता था कौन जीतेगा, लेकिन आपकी जो हिटिंग टैलेंट था मोना, वो सबसे लास्ट में बैटिंग करने आई। क्या अगर उनको प्रमोट करके आगे भेजा जाता तो मैच का रिजल्ट बदल सकता हाँ, था? मे भी हो सकता था, कुछ डिसीजन गलत थे, लेकिन मैं खुद हूँ, मेरी टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया और मैं आगे भी अच्छा खेलूंगी। मैं ये भी कहूँगा मैवरिक्स ने एक बहुत बढ़िया टीम स्पिरिट का मुजाहिरा किया। यहाँ पर बैटिंग करने टीम ओनर ओपनिंग करी उन्होंने, जबकि स्कोर 82 था, नॉट इजी टू मेक। सारे लोगों ने बैटिंग करी, बॉलिंग करी, बहुत अच्छी टीम स्पिरिट दिखाई टीम मैवरिक्स ने। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर टीम मैवरिक्स। What is your assessment of your team today? I'm happy. I'm very proud of my team. That's the true leader who stands behind his or her team no matter what. We came here to have fun and everyone had fun, right? We enjoyed it. We enjoyed it. Everybody enjoyed it. Maybe we enjoyed it too much. Hooray! तीन गेम में से सिर्फ एक ही जीते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस टूर्नामेंट को? हम जीतने के लिए आए थे, बट अभी कैसा है कि ये इट्स अ टीम गेम एंड सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टीम के लिए एंड वी एंजॉयड अ लॉट। लाइक व्हाटएवर गेम्स वी प्लेड, 3 गेम्स वी प्लेड, वी एंजॉयड अ लॉट एंड इट्स अ टीम स्ट्रेंथ एंड इन लास्ट मैच we win the game with the hearts. So our strategy was simple: win the game and play rocky. Yeah, and what would you like to say about Sneha, man? She was outstanding as a bowler for the team. Yes, absolutely. She was there to support for bowling, for batting, for fielding, all the events she was there. And along with her, there was we came here to not win the game, but enjoy it. We enjoyed, yeah. Looking forward to another season. Yes, definitely. Thanks. This was Kamlesh, and I would like now to invite the winning captain, Vinay, to have a chat. Final जीत है। बहुत अच्छा खेली पूरे टूर्नामेंट में। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो फर्स्ट सबसे पहले मैं टैक्स सही को सबसे पहले मैं टैक्स सही है जिन्होंने प्रीमियर लीग रखी है, उनको दिल से शुक्रिया देता हूँ जिन्होंने हम लोग को चांस दिया है यहाँ पे खेलने का, और हमारी टीम को और पूरी टीम वर्क से खेली है, उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और विनिंग टीम। एंड जो रनर अप थे वो भी सबसे बेस्ट थे, उन्होंने लास्ट तक हम लोग को मतलब लास्ट तक टॉप दिया। हाँ, तो लास्ट तक ऐसा था कि मोना जो खेल रही थी तो हम हार भी सकते थे लास्ट बॉल तक। से फोन आ रहा था, मोना मैच खेलोगे क्या? मैं बोली नहीं, मन नहीं है, पर काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप सबके साथ खेल के। मेरी टीम या एवरीवन जितने लोग भी खेले, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप सबका एंड माय टीम जो सपोर्टिंग। बट हार गए, 1 रन, 1 बॉल था मेरे पास, पर सॉरी, पर काफ़ी जीत हार लगी रहती है और मैंने एंजॉय काफ़ी किया। थैंक यू सो मच एंड लव यू। कभी भी कभी आप लोगों के साथ मौका मिलेगा तो डेफिनेट में खेलने आऊँगी यहाँ। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एमजीए ग्रुप जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था टैक्स से ये प्रीमियर लीग, बहुत अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन भी हुआ था और हमने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्रीमियर लीग एंड हुई है। अच्छा लगा। आपको एक मैच आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पूरे टूर्नामेंट में यही स्ट्रैटेजी थी कि बेस्ट टीम बनाने की और टीम वर्क के साथ खेलने का। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, सबको चांस मिला, इक्वली चांस मिला, सबने अच्छे से परफॉर्म किया। थैंक यू मैन, थैंक यू थैंक यू सर। I enjoyed the tournament very much, although we lost, but it was fun playing for the game. ऐसे टूर्नामेंट कौन होने के लिए फाइनल से आ जाओगे।
हमारा मैच बताने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। जो हमारा गेमिंग स्ट्रेटेजी था वो बहुत अच्छे से फॉलो हुआ। थ्रू द बैक हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे थे और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है। नेक्स्ट ईयर तुम लोग और भी साथ में लेके आ सकते हो, क्या रहेगा? वो डिपेंड्स ऑन दीदी। कैसे लगा तुम्हें ये टूर्नामेंट एमजे ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था? टैक्स सही अपने में बहुत अच्छा फॉलो हुआ और जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो तो हो गया अच्छा So, एक और क्या रहा है इसका भाई? एक्सपीरियंस कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इंडियन एफसी। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतना यहाँ पे आके फेमिलियर होगा सकते थे। लगा था कि कैसा एक्सपीरियंस होगा मुझे पता नहीं था। और अभी मैं अगर यहाँ पे आया और देखा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग से बाहर से आया हूँ यहाँ पे खेलने के लिए। सब मुझे फैमिली जैसे लगे, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों में कि आप बाहर से हो या फिर आप स्टाफ हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे एक सब थैंक यू Thank you to all first MGA Group for organizing टूर्नामेंट। ओके, बोलूँ तो सबसे पहले मेरे भाई का स्ट्रैटेजी बहुत था उसमें। उसने जब मुझे घर पे आया तभी पहले बताया कि मैंने तुझे टीम में डाला और परचेस किया बाकी सब गेम होने के बाद फर्स्ट गेम में जो था हम लोग का कुछ डिसीजन रॉन्ग हुआ, लेकिन बाद में फिर मनीष सर ने आके फिर रन्स का जो पेनल्टी हम लोग ने एक्सेप्ट किया। बट ओवरऑल गेम अच्छा था और हम लोग के सब टीम मेंबर्स ने बहुत मेहनत किया, इसलिए हम लोग ट्रॉफी जीत गए। Speak whatever they feel about today's event. I would like request Mr. Sarath from Olive Cloud. He is a businessman who is into digital marketing, who is into online selling of garments, specifically women garments, and anyone looking forward to grow their business online, anyone looking forward to expand their business, any homely woman, any person looking forward to really expand and grow and be a strategic businessman, I think Olive Cloud is the place where you should consult yourself. And Olive Cloud have an amazing knowledge of more than 30 years into the industry, right? So more than 30 years into the industry, have got hundreds of business gone online, and that's what Olive Cloud is all about. I would like Mr. Sarath to give a few words about himself, about Olive Cloud, and about our experiment, our startup. Tax sahi hai. Thank you. Over to you. Thank you, Manish, for such introduction. And a lot of thanks to Manish and Mahima, as you have called us, as you have called for this event actually. So it's very amazing actually, like what we have felt like first time I have came into this event, and like we are just introduced, but like it's like a family like kind of feeling. And I'm very lucky and very honored also like to come here. And like we have also associated with MGA Group, and we feel like this participation, this association will go a long way and will do some wonders in the future. And thanks, Manisha. Thank you. Spirit like I am really glad the matches, especially the final leg. Okay, thank you, Mr. Sarath. I would now like to request Mr. Amit Rohila to come to stage. He is Block 7, and I would request a few words from him. Thanks, guys. So it's my pleasure to be here. I could see all of you playing under some green and from right from 22nd floor of that building in Morgan Stanley. I was working there today since morning, and I could see some tents and something is going on. Then I inquired from my brother-in-law, Mr. Neeraj. He told me some cricket tournament is going on from MGA Group, and I could not risk myself to not be here. So I came down. I personally saw all the tournaments, all the 3-4 matches of this MGA Group, and I can see the best part was the women's empowerment. I could see how the women are empowered in our society and even in our personal organizations like MGA Group. So this is not only the initiative which only a multinational company can take, it can be taken by even MGA Group also. And they have demonstrated very well on this that yes, women are empowered. They are not no more lower than any male colleague or any. But still, I can see the spirit of the team playing spirit, and yes, which we can see here in this tournament. And yes, definitely somebody might have won, somebody might have lost, but this is not about winning or losing any match, but this was the team spirit. I can see very much in a clear ground. So really, I'm delighted to see the proper melting of all type of players and the team building spirit. And rightly it is mentioned here that women empowerment is there. It's everywhere, and I have seen personally here in this ground as well. So it's my wish to MGA Group, they should grow to much above height, much higher height. It should take it another level.